Hello dear students. I was explaining you chapter 13th, that is internet online surfing. In that chapter up to URL I explained you, right? Today I'll start with link. But before that I need to share something with you. In every IT period I'm asking some of the questions related to your current video which I posted, right? And what I observe, I saw very few students were giving me answers. They were writing answers, correct answers. I must appreciate these students. But about those who are not giving answers, who are not involving themselves in that particular questionnaire, so definitely they are not showing their presence in the classroom. Okay, you need to be active in the classroom, beta. It is really very bad that you are only watching the video and some are even not watching the videos also. So you're only watching your videos and you are not involving yourself in these question answers. It will show your presence in the class, I am telling you, and definitely you will get benefit in your report cards. If you are showing your presence, if you are showing your involvement in the classroom during the period, during these 30 minutes, so definitely you will get benefit in your report card. There is some of the sections there, where we need to fill grades regarding your class performance. So definitely you will get A, grade A in that report card. Okay, but the condition is this: you need to be present in the classroom in these 30 minutes. You need to watch the video properly. You need to respond on each and every question I am asking there, right? If you will not do so, so I have a record in Google Classroom, and accordingly only I am going to give you marks and I am going to give you grades which show your class performance, right? So to be very alert, you need to give answers. So beta आप उसमें presence show करो, अपनी answers दिया करो. That is important. Okay, and that is only possible whenever you will watch the video properly. तभी ये पॉसिबल है कि आप उनके आंसर्स हमें प्रोवाइड कर सको, राइट? दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. आप इजीली उनके आंसर्स दे सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड टू लिसन द वीडियो, वॉच द वीडियो प्रॉपरली. ओके, देर आर वेरी यूजुअल क्वेश्चंस. कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट आई वॉन्ट योर इन्वॉल्वमेंट, आई वॉन्ट योर प्रेजेंस. सो डोंट थिंक कि कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है तो आंसर तो सेम होगा, हम नहीं देते हैं. डोंट थिंक दैट. आप अपना आंसर देकर अपनी प्रेजेंस शो करोगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिपोर्ट कार्ड, फॉर योर प्रोग्रेस कार्ड. ओके, फॉर योर परफॉर्मेंस, for your individual progress, right? Now I'm going to start. So I hope ki from today you are going to involve yourself in that questionnaire, right? Now starting with link, page number 152 from your book, I'm telling you. So what is link? A link is a kind of cross reference to another web page. What is that? It is also called hyperlink. Link is also called hyperlink, which is a built-in connection to another related web page or the part of a web page. What is a link? Link क्या है? आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करने वाला, that is link. Okay, it is also known as hyperlink. A link can appear as an icon, इमेज और टेक्स्ट. लिंक आइकन की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में या टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में अपेयर हो सकता है. ओके, व्हेन यू क्लिक द लिंक द अदर पेज लोड्स इनटू योर वेब ब्राउजर ऑटोमेटिकली. जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो, एज द एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू, टुडे यू आर गोइंग टू अटेंड योर मॉक टेस्ट, and there in that message which we send you, which Vijay sir sent you yesterday, in that message you have one link. He provided you one link, and with the help of that link directly you that page, particular page for mock test will appear on your screen. So link क्या होता है? Link एक दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करने का मीडियम है. ओके, दैट इज़ द वंडरफुल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर आइज कि आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली कहाँ पर पहुँच जाते हो? मॉक टेस्ट के वेब पेज पे. अंडरस्टूड? So that is the link. So it can appear as an icon, image or text. आपको सर ने जो लिंक दिया है वो it is in the form of text.
So when you click the link, the other page loads into your web browser automatically. I think it is now you understood that particular topic link. Okay, now next is internet service provider. What is internet service provider? Short form is ISP. It is a company that provides access to the internet for a monthly fee. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी. ये कंपनी का कंपनी को बोलेंगे हम. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कंपनी? इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट, जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है. एंड फॉर मंथली फी ऑल्सो इट विल चार्ज फी. To connect to the internet, you must sign up for an account with an internet service provider. आप साइन अप करोगे किसी अकाउंट के थ्रू उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में. ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स who will offer you different services and benefits at different cost. Means there are so many service provider companies, their policies are different, their services are different, and as well as the benefits they are providing, these are also different. एंड द कॉस्ट इज ऑल्सो, कॉस्ट भी वेरी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग, उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट वेरी करती है. डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो डिफरेंट कॉस्ट पे प्रोवाइड करती हैं. सो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वी कैन टेक वन एंड वी कैन गेट बेनिफिटेड. राइट, यू कैन चूज फ्रॉम मैनी ISPs in India. The main ones are Tata Indicom. These are the internet service provider companies beta. Okay, Tata Indicom, MTNL, BSNL, Airtel, Hathway, DEN and Dishnet. Okay, so simply what is internet service provider? It is a company which provides us internet services on a monthly fee. Okay, and there are so many internet provider companies. According to our wish, according to our need, we can take the service, right? And next one is home page. What is home page? The starting page of a website is called home page. किसी भी वेबसाइट का जो स्टार्टिंग पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, दैट इज होम पेज. लाइक आप गूगल पे क्लिक करते हो, जो फर्स्ट पेज आ रहा है जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो, दैट इज होम पेज, उस वेबसाइट का स्टार्टिंग पेज. इट इज़ सिमिलर टू अ बुक कवर. जैसे जस्ट इट इज़ सिमिलर टू अ बुक कवर. इफ़ वी हैव कंप्यूटर बुक, तो एक कवर है बुक का थ्रू विच वी कैन अंडरस्टूड दिस इज़ अ कंप्यूटर बुक. So it is similar to a book cover or a table or content of contents of a website. It provides information about the site purpose and its contents. The initial home page that is displayed is the one selected by your web browser. Initial home page जो किसी भी web, suppose we are making a website, suppose in that Benner Public School is also have website on net. So जो starting उसका page है, that will decide. अगर हम कोई साइट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका वेब पेज, स्टार्टिंग पेज वी कैन डिसाइड. सो द इनिशियल दैट मीन्स द स्टार्टिंग होम पेज दैट इज डिस्प्लेड इज द वन सिलेक्टेड बाय योर वेब ब्राउजर. ओके, यू कैन चेंज द होम पेज एट एनी. ये सिलेक्टेड होता है वेब ब्राउजर के थ्रू, बट हम उस होम पेज को चेंज कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम as per our need. Many sites also allow you to personalize the home page so that it displays the areas that interest you. Okay, so according to your wish you can change, but by default it is selected by your web browser. Understood? So for today that is all.